last part of rural development, organic farming, sustainable development and organic farming. In the recent years, there is a considerable rise in awareness of the harmful effects of chemical-based fertilizers and pesticides. Green revolution आया तो उसकी जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये क्या था? Heavy use of pesticides, chemicals, fertilizers. तभी तो प्रोडक्शन इतनी रैपिडली बढ़ी. So in the recent years, there has been a considerable rise in the awareness relating to the harmful effects of the chemical-based fertilizers and pesticides. Conventional agriculture relies heavily on chemical fertilizers and toxic pesticides, which enter the food supply, penetrate the water resources, harm the livestock, deplete the soil, and devastate natural economic systems. कह रहे जो पेस्टिसाइड्स हम यूज कर रहे हैं वो फूड सप्लाई में तो आएंगे ही, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, वाटर रिसोर्सेज में भी पेनिट्रेट करेंगे. दे विल हार्म द लाइव स्टॉक ऑल्सो, क्योंकि जो भेड़ बकरी होंगे वही तो चारा खाएंगे. डिप्लीट द सॉइल एंड डेवस्टेट नेचुरल इकोनॉमिक सिस्टम्स. बट क्योंकि सस्ता पड़ता था और थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन बहुत फास्ट पेस पे बढ़ जाती थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन तो काम किया. बट ओवर द इयर्स ही तो पता चलती है ना उसकी दिक्कतें क्या क्या आई उसके साथ. सो एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इवॉल्व टेक्नोलॉजीज व्हिच आर इको फ्रेंडली एंड आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. One such eco-friendly technology is organic farming. Organic foods खाते हैं कुछ लोग आजकल, महंगे पड़ते हैं, but उसमें use of pesticides ना के बराबर होता है. Meaning of organic farming. Organic farming is the form of agriculture that relies on techniques such as crop rotation, green manure, compost, and biological pest control. बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, ना कि पेस्टिसाइड्स को यूज किया जाए. दिस मेथड अवॉइड्स यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेफ एंड हेल्दी फूड विदाउट लीविंग एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट. In short, organic agriculture is a whole system of farming that restores, maintains, and enhances the ecological balance. There is an increasing demand for organically grown food to enhance food safety throughout the world. तो ये drawbacks very important. उन drawbacks को हटाने के लिए ही क्या थे drawbacks? Conventional agriculture relies heavily on chemical fertilizers and toxic pesticides, which enter the food supply, penetrate the water resources, harm the livestock, deplete the soil, and devastate natural economic systems. तो क्वेश्चन आता ना, why is there a need for organic farming? ये है उसका आंसर कि ट्रेडिशनल फार्मिंग की वजह से क्या दिक्कत आ रही है. Clear है? What are the benefits of organic farming? Number one, economical. यही उसके आगे जाके ड्रॉबैक भी होने वाला है. Organic farming offers a means to substitute costlier agricultural inputs such as HYV seeds, chemical fertilizers, pesticides with locally produced cheaper organic inputs. तो डाउट आ सकता है कि सर अगर ये सस्ता मेथड है तो महंगा क्यों पड़ता है, मतलब लोगों को महंगा क्यों मिलता है? एनी आइडिया? मेहनत ज्यादा लगती है और इसकी शेल्फ लाइफ कम, इसकी प्रोडक्टिविटी लो है, टाइम ज्यादा लगता है इसको बनाने में, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर में क्या है, जल्दी जल्दी ज्यादा बनता है तो पर यूनिट कॉस्ट उनको कम पड़ती है. इसमें टाइम लगता है बनाने में और प्रोडक्टिविटी एरिया वाइज
लो है एज कंपेयर टू यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट कम होती है बट आउटपुट भी रिलेटिवली कम होता है, जिसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट आगे बेचने के लिए उनको ज्यादा पड़ती है। ऐसा क्योंकि अब इनको पेस्टिसाइड्स नहीं चाहिए ज्यादा, तो वो पैसे बच गए ना, इकोनॉमिकल है, बट प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। Generates income through exports. It generates income through international exports as demand for organically grown crops is very high, is on the rise. Provides healthy food. It provides healthy food as organically grown food has more nutritional value than food grown through chemical farming. Source of employment. Organic farming generates more employment opportunities as it requires more labor input than conventional farming. Due to this reason, India has comparative advantage in organic farming because of abundance of labor. So source of employment, provides healthy food, safety of environment. तो जो ये most important point है कि उसमें था ना, food से मतलब आपके soil को भी affect कर रहा है, livestock को भी affect कर रहा है, water bodies को भी affect कर रहा है, तो it was very harmful to the environment. The produce of organic farming is pesticide free and is produced in an environmentally sustainable way. Sustains soil fertility. तो उसमें lose हो रही थी soil fertility. Organic farming improves soil fertility through the application of organic matter inputs in the form of animal manures, compost, and farmyard manure. On the other hand, conventional farming makes use of chemical fertilizers, which erodes soil fertility. So very, very important. What are the benefits? एक तो ये हो गया why organic farming was introduced और benefits ये, तो वो the problems of conventional farming techniques, ये benefits. Popularity of organic food. Just read once. Organic food is gaining popularity across the world. Many countries have 10% of their food system under organic farming. Nowadays, many retail chains, supermarkets are accorded with green status to sell organic food. Organic food command higher prices of around 10 to 100% as come, तो महंगे पड़ते हैं काफी. In 1995, Kisan Mehta of Prakriti, an NGO, first suggested that cotton, which uses maximum chemical pesticides, could be grown organically. At present, 130 farmers have committed 1,200 hectares of land to grow cotton organically on the International Federation of Organic Agricultural Movement standards. Quality भी maintain करेंगे, organically भी बनाएंगे. महंगा होता है definitely, इसीलिए क्योंकि time ज़्यादा लगता है. What are the challenges before organic? जब इतना ही अच्छा है तो दिक्कत क्या है? मतलब इतनी सारे benefits थे, economical है, generates income through exports, healthy food है, employment generate हो रही है, environment भी safe है, soil fertility भी बनी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी. तो फिर दिक्कत क्या है? Less popular. Organic farming needs to be popularized by creating awareness and willingness on the part of farmers for adoption of new technology. There is serious need for an appropriate agricultural policy to promote organic farming. Popular nahi hai. Lack of infrastructure and marketing facilities. Organic farming faces problems of inadequate infrastructure, marketing facilities, proper storage facilities nahi hai, marketing facilities nahi hai. Low yield, सबसे बड़ा drawback ये होता है. कह रहे भाई, जब कम मेहनत करके ज्यादा आउटपुट आ सकता है, तो ज्यादा मेहनत करके कम आउटपुट क्यों? तो illiteracy है, तो वो mindset है. Organic farming has a lesser yield in the initial years as compared to the modern agricultural farming. As a result, small and marginal farmers find difficult to adapt to large scale production. कह रहे sustain कैसे करेंगे? Starting में कम है, हम खाएंगे क्या फिर? Shorter shelf life. Organic produce has a shorter shelf life as compared to sprayed produce.
limited choice of crops. The choice in production of off-season crops is quite limited in organic farming. So what are the challenges before in organic farming? In spite of all these limitations, organic farming helps in sustainable, very, very important keyword, sustainable development of agriculture. And India has a clear advantage in producing organic products for both domestic as well as international markets. So note on organic farm.